I welcome you all in today's webinar. My name is Imran Zafar. I am Country Manager in Enercon Systems. I am Electrical Engineering graduate from NEDT University. Today with me, my colleague Bilal Siddiqui, who is assisting me with this webinar. He is looking after solar division in Enercon Systems. Starting the topic of our today's webinar is basic technical and commercial aspects of solar system. What we will try to cover in this webinar is to provide you all the technical and commercial information related to solar systems. But we see in the initial days, solar energy was only used as a heating purpose. But with the development of technology and the solar panels material, we would able to use solar lights to convert it into electricity, which is DC, with a phenomenon called photovoltaic effect, which is the process of converging PV cells sunlight into electricity. There are three kind of basic solar panels available. The basic ingredient is silicon, and we have monocrystalline solar panels, polycrystallines, and thin film type of panels. There are not a number of terms which associated with solar panels, but we would like to keep it simple and discuss only most relevant and related uh, terms in this webinar. As far as application of solar panels is concerned, we understand that when we convert solar light into electricity, which is not directly usable electricity, as we have all the appliances in our home are running on AC, while solar panels provide us DC electricity. So we can use it in three ways. One is we utilize alternate to grid power. In that case, we will add inverter in between, which will be share with you in coming slide. The other application is that we directly use these solar panels to run our appliances. In that case, the appliances should be compatible with DC electricity. Then the third one is we neither use them for appliances, but we use the solar panels to charge our batteries. So we have a number of applications in future where the cars and other applications where batteries are being used. But the most important thing about solar panel is their return of investment. In what we can say, in urban residential systems, solar panels at the moment can be a luxury. You can, but as far as rural areas concerned, it is indeed a very important need, where we can run solar pumps and other appliances where we have no grid power available. So we can categorize return on investment based on your self consumption, or you are selling power to back to utility. You can do it as a small home or industry, or you can do it as a large scale IPP. So we will discuss all these things step by step and understand and answer all your relevant queries. So, if you are doing self-consumption, you understand that by doing this, you will able to reduce your electricity bill, and this is the best achievable ROI when you have your solar system completely utilized by your own. Because when you are consuming electricity, when you are not consuming electricity, you are reducing bill. And even if you sell back to electricity to your grid, then the rate will be the higher. So when you are buying power from utility, it will be on a higher price. When you are selling power to the grid, it will be on low price. So best is to consume panels, so output of solar panels, to minimize your ROI time. So the second reason why we use solar panels is to manage load shedding. In this case also you consume the solar power, but the reason is different. You not only want to reduce electricity bill, but you have a more bigger problem of managing your load shedding. So we will understand the different type of inverters by which we can achieve this purpose.
The third reason is to run your DC appliances. Again, we are going to completely consume power of solar panels, and then these appliances will give us shortest return of investment. The next is selling excess power to grid. In this case, when your load is not sufficient to completely utilize your solar power, then you sell back to utility grid through net metering. We will understand more in detail what about the process and the prerequisites of the net metering. So we understand that in this section, ROI normally is 3 to 5 years, depend how much you consume the power of solar panels. How solar panel system works? We understand the solar panels produce DC electricity. If we want to use it for our normal appliances, then we have to add inverter, which will convert the DC power to AC power. Then we have different appliances connected. So this is a process which we understand more in detail. Now I will ask my colleague Bilal to continue from here and share more details about the inverters. Assalamualaikum everyone. Thank you. Thank you so much for being a part of this webinar. And one of the most important components solar power system are the inverters. Inverter is a device that converts a DC power into AC power. And according to the application, हमने इनको तीन categories में classify किया है. The first one is the on-grid inverters. The second one are the off-grid inverter, and the third one are the hybrid inverters. जहाँ तक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स का ताल्लुक है, ये हम उन रिमोट एरियाज़ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्रिड अवेलेबल ना हो और स्टैंड अलोन सिस्टम हो. और बैकअप के तौर पे ऑफ पीक टाइम में हमारे पास बैटरी बैंक्स मौजूद होते हैं, जिससे हम लोग जो भी हमारे अप्लाइंसेस हैं उनको हम इजीली रन कर सकते हैं. ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स उन अर्बन एरियाज़ के लिए होते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्रिड अवेलेबल हो और हमारा बेसिक मोटिव अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना हो. इनका आइडियली जो टाइम होता है, जो पीक आवर्स होते हैं, वो 9 AM से 3 PM होते हैं. जो इनकी स्पेशलिटी होती है इन इन्वर्टर्स की, ये होती है कि आपको ये मैक्सिमम पावर जनरेट करके देते हैं जितनी आपकी यूजेज होती है आप वो इस्तेमाल करते हैं, और द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू एक्सपोर्ट इट टू द ग्रिड, जिसके बदले में आपकी जो भी प्राइमरी यूटिलिटी सोर्स है वो आपको कुछ ना कुछ जो भी कुछ यूनिट्स हैं या कुछ पेमेंट है वो आपको रिटर्न कर देती है. जहाँ तक ताल्लुक है हाइब्रिड इन्वर्टर्स का, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड ऑन ग्रिड सिस्टम. इसके अंदर बैटरी बंक्स भी मौजूद होते हैं और इसके बाद ये भी कैपेबिलिटी होती है कि ये अपनी पावर को एक्सपोर्ट कर सके जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हैं. इसके अलावा एज एन इंस्टॉलर और एज अ कंज्यूमर यू बोथ नीड टू नो कि मेजर कंपोनेंट सोलर पैनल के अंदर क्या क्या होते हैं. सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे पास सोलर प्लेट्स अवेलेबल होती हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स एंड द नॉलेज ऑफ सोलर पैनल्स के कितनी किस्म की सोलर प्लेट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं. इन्वर्टर कौन कौन से अवेलेबल हैं. इसके अलावा बैटरीज होती हैं अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ एसेसरीज मौजूद हैं जिसके अंदर ब्रेकर्स हैं, एसपीडीज है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं और केबल्स मौजूद हैं. एज अ कस्टमर और एज इंस्टॉलर हमें बिल्ड चीज़ का पूरा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास सोलर प्लेट्स मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल हैं और हमारे पास इन्वर्टर की कौन कौन सी रेंज अवेलेबल है. सोलर प्लेट्स इनिशियली हमारे पास 150 वाट से लेकर 590 वाट तक की अवेलेबल है. इनफैक्ट अब 600 वाट की भी सीरीज़ इन फ्यूचर हमारे पास अवेलेबल होगी. और देखें, अगर आप अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का पूरा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी प्लेट आपको इस्तेमाल करनी है और कौन सी पावर की कितने वाटेजेस की प्लेट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं. जो इन्वर्टर्स हैं आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसको बहुत ही एहतियात के साथ और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ के हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए. और इसकी जो रेंज है वो 1 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक की रेजिडेंशियल सोलर इन्वर्टर्स हमारे पास इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं. लेकिन नॉर्मली 3.2 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक के जो सिस्टम्स हैं, जो इन्वर्टर्स हैं, वो ही हम घरों पे इंस्टॉल करते हैं. दैट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस. इसके अलावा हमारे पास हमें जो अगर हम अपना सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं और हमें अपने घर का लोड पता करना है, तो ये हमारे पास एक चार्ट मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास सबके वाटेजेस लिखे हुए हैं. हम इजीली अपने घर का जो भी रिक्वायर्ड लोड है वो यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल एक्सरसाइज फॉर द रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम. इसके अंदर हम सबसे पहले अपना एसी लोड कैलकुलेट करना होता है. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. For instance, we have a couple of fans, we have energy saver, LED, laptop, machines, air conditioner. हमें सबके wattages पता है. हमने इन wattages को ऐड किया and we have a total load of 3 kilowatts.
Now it's time to select how many plates, a number of plates required for solar power system, और इन्वर्टर कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे घर का लोड कितना है, दैट वाज अराउंड 3 किलो वाट्स। और लेट्स से यू चूज़ अ प्लेट ऑफ 350 वाट्स, 350 वाट की हमने प्लेट्स अवेलेबल है हमारे पास, इजीली हमने वो इस्तेमाल की है। और इसका देखिए नंबर ऑफ़ प्लेट्स आपको कितनी लगानी पड़ेंगी, इसका एक बेसिक फार्मूला है कि जो आपका टोटल लोड है इसको आप डिवाइड कर देंगे जो भी आपकी सोलर प्लेट की रेटिंग है। हमारे पास जो टोटल लोड था 3 किलोवाट था, इसको हमने 350 से डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज़ समथिंग अराउंड 8.7, यानी कि 9 प्लेट्स हमारे पास अवेलेबल हम लोग इस्तेमाल नॉर्मली करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि हमने यहाँ पे दो एडिशनल ऐड जो प्लेट्स हैं उनको ऐड किया है। द रीज़न इज़ क्योंकि जो सोलर प्लेट्स होती हैं हमारे पास वो 100% एफिशिएंसी पे ऑब्वियसली काम नहीं करती हैं, कुछ एनवायरमेंटल लॉसेस होते हैं, वी हैव टू कंसिडर देम एज वेल। तो हम यहाँ पे अपनी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए वी हैव एडेड कपल ऑफ प्लेट्स, तो जिससे हमारा जो टोटल डीसी पावर है वो 3.8 किलोवाट्स हो गए, दैट विल बी इनफ टू रन अ लोड ऑफ 3 किलोवाट्स। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो सोलर पावर सिस्टम की कैलकुलेशन होती है वो अमाउंट पर वॉट के हिसाब से होती है, जिसका बेसिक फार्मूला यहाँ पे मेंशन भी है। द टोटल कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पावर डिलीवर्ड बाय सोलर सिस्टम। इसके अलावा ये हमारे कुछ बेसिक कनेक्शन है, ये नो हाउ ऑलमोस्ट इंस्टॉलर्स को तो होती ही है, इसके अलावा हमारे जो कस्टमर हैं उनको भी इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इन्वर्टर में कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं, इन्वर्टर के इनपुट आउटपुट्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा इन्वर्टर किस तरीके से काम करता है। तो ये एक छोटे से कनेक्शंस है इन्वर्टर्स के, कि इन्वर्टर को किस तरीके से हम इन्वर्टर के साथ सोलर प्लेट्स किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, बैटरीज कैसे कनेक्ट करेंगे, और इसके अलावा उसके आउटपुट से हम अपने अप्लाइंसेस को ईजिली रन कर सकते हैं। And now it's all about the concept of the string. If you're an installer and you're willing to install a solar power system at your home, then you need to understand the basic concept of the string. Without understanding the concept of the string, that is absolutely impossible to design a solar PV system and to install a solar PV system as well. So when you're designing a solar power system, it's crucial to know that the minimum and the maximum number of modules that can be connected into these referred as a string. अगर हम इसको आसान तरीके से एलेबरेट करना चाहें तो दैट इज़ जब हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल हों और हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और उनका जो भी हमारे पास आउटपुट है उसको हम इन्वर्टर के इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे, तो दैट इज़ नोन एज अ स्ट्रिंग। String has its own importance obviously because if you are willing to install a solar power system तो हमें number of string define करनी पड़ती है, और हम कितने नंबर ऑफ, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम कितने नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा शीट ऑफ इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर की जो डेटा शीट होती है उसके अंदर हमारे पास इजीली हमारे पास ये जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज होती है वो अवेलेबल होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास हम कितनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको कितना आपस में पैरेलल कर सकते हैं। इसके अलावा नाउ वी हैव अनदर स्लाइड दैट इज़ अबाउट द वायरिंग ऑफ सोलर पावर सोलर पैनल्स, जिसके अंदर हमारे पास 3 सेट्स अवेलेबल हैं। सेट 1 के अंदर हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, सेट 2 के अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं, सेट 3 के अंदर तीन हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हर मॉड्यूल है उसके जो वोल्टेजेस हैं दैट इज़ 24 वोल्ट्स, और उनके जो एम्पेयर्स हैं दैट इज़ 14 एम्प्स। सेट ए जो हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल ए और बी अवेलेबल है, इसको हमने सीरीज़ कर दिया। इसी तरीके से सी बी को हमने सीरीज़ कर दिया और ई एफ को हमने आपस में सीरीज़ कर दिया, और तीनों साइड को हमने आपस में वी हैव जस्ट पैरेलल दैम, जिससे हमारे पास ऑब्वियसली अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास वोल्टेजेस राइज होते हैं, अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास एम्पेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो एम्पेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट है वो अब 48 वोल्ट्स है, एंड दैट इज़ एंड 42 एम्पेयर्स। इसके अलावा वी हैव अनदर स्लाइड एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द बैकअप टाइम ऑफ अ बैटरी। देखिए अगर हम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और उसका बैटरी बैकअप टाइम हमको रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सा वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ द बैटरी वोल्ट इंटू द बैटरी एम्पेयर आर इंटू द नंबर ऑफ बैटरी इंटू द एफिशिएंसी इज डिवाइडेड बाय द टोटल लोड दैट यू आर रनिंग। फॉर इंस्टेंस इसको एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव द टू टू इन्वर्टर्स ऑफ 1 टन और हमारे पास 5 एनर्जी सेवर अवेलेबल है, और टोटल जो लोड है हमारा दैट इज़ 1890 वाट्स।
लेट्स से हमारे पास जो बैटरीज अवेलेबल हैं दैट इज़ अ 200 एम्पियर आवर बैटरीज, और अगर हम तमाम वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, वी गॉट आंसर 3.55 एम्पियर आवर। इसके अंदर जो नंबर ऑफ बैटरीज हैं वो हमने 4 इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि हमारे पास जो एक बैटरी का वोल्टेज है दैट इज़ अ 12 वोल्ट। अब हमारे पास अगर 12 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है तो हमें इन्वर्टर को 48 वोल्ट्स बैटरी के पूरे प्रोवाइड करने होते हैं। तो वी हैव टू मेक अ बैंक ऑफ 40, वी हैव टू मेक अ बैंक ऑफ 4 बैटरीज इन ऑर्डर टू गेट द 48 वोल्ट्स। और आप इसको 8 भी कर सकते हैं, इसको 12 भी कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको बैकअप कितना चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक फार्मूला फॉर हाउ टू कैलकुलेट द बैटरी बैकअप। इसके अलावा बैटरी जब बैकअप देगी आपको डेफिनेटली उसको चार्ज होने के लिए कुछ टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। So that is the formula, and charging time of a battery is basically the ratio between the battery ampere hour divided by द चार्जिंग करंट। देखिए इसको भी अगर हम एग्जाम्पल से सोर्स अगर सॉल्व करना करना चाहें तो हमारे पास एक 20 एम्पियर आवर का चार्जर है या बैटरी है या कोई भी सोर्स है जो बैटरी को चार्ज करे, इट कुड बी सोलर पैनल, इट कुड बी यूटिलिटी इन केस ऑफ हाइब्रिड सिस्टम। तो और हमारे पास 200 एम्पियर आवर की बैटरी है, तो लेट्स से इसको जो चार्जिंग टाइम चाहिए होगा दैट इज़ अबाउट द 10 hours, and remember there's a note, the charging current should be 10% of the ampere hour rating of a battery. Now that is one of the most important topic जो कि नेट मीटरिंग से रिलेटेड है, और ऑन ग्रिड सिस्टम में नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं। नेट मीटरिंग, व्हाट एग्जैक्टली द नेट मीटरिंग? नेट मीटरिंग इज बेसिकली हम बिलिंग मैकेनिज्म जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारे पास जनरेट हो रही है और जितना हमारा यूजेज है हम उसको यूज़ करने के बाद जो हमारे पास स्पेयर में इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको हम के इलेक्ट्रिक को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसके बदले में के इलेक्ट्रिक जो आपका के इलेक्ट्रिक हो, वापडा हो, जो भी आपकी प्राइमरी यूटिलिटी सोर्स है, हम कराची में रहते हैं तो हम के इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, तो जो भी आपकी प्राइमरी यूटिलिटी सोर्स है वो आपको कुछ यूनिट जो है वो क्रेडिट कर देती है। सो दिस इज़ नोन एज अ नेट मीटरिंग। ये एक बिलिंग मैकेनिज्म है। इसमें हम एक बाई डायरेक्शनल नेट मीटर इंस्टॉल करते हैं जो कि आपकी उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और अगर आपके पास डेफिशिएंसी है और आपको आपका सोलर पैनल इतनी जनरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रिक से या अपनी किसी भी प्राइमरी यूटिलिटी सोर्स से उससे आप इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक बिल मौजूद है जो कि हमारे कस्टमर का है। हमने एक 15 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया था कराची में, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक के बेनिफिट्स, जो बेसिक मोटो है इस स्लाइड को शेयर करने का, दैट इज़ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ नेट मीटरिंग, उसको शो करवाना है आपको। देखें इनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था दैट वाज अराउंड 45,000, और इनका जो नेट मीटरिंग बेनिफिट है दैट इज़ 47,000। इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनका 2,000 का के इलेक्ट्रिक के पास क्रेडिट है। सो दिस इज़ व्हाट नेट मीटरिंग कैन डू। यानी कि आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे करना ना पड़े। यू आर मैक्सिमम गेटिंग, यू आर मैक्सिमम यूटिलाइजिंग योर सोलर पैनल्स। इसके अलावा नाउ दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फेज अबाउट द मेंटेनेंस एंड द लाइफ साइकिल। देखिए अगर आप सोलर पैनल्स की मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल की बात करें, जो कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स की तरफ से कि हम सोलर पैनल लगा लिया बट व्हाट शुड बी द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लाइफ साइकिल। सो इसको हमने कुछ सेगमेंट्स में, इसको कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइस किया, कुछ फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया। अगर फेज़ 1 की बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट फेज़ है जिसके अंदर प्री प्लानिंग आती है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट, फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनेंसिंग, फंडिंग, परमिट, लाइसेंसिंग, यानी कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम पे जा रहे हैं तो नेट मीटरिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन ग्रिड सिस्टम कितने तक हम इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी प्राइमरी रिसोर्स हमें क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम जो सिस्टम लगाना चाह रहे हैं उसके अंदर हम कौन सी सोलर प्लेट्स इस्तेमाल करेंगे, कौन से इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे, कौन से ब्रांड की केबलिंग इस्तेमाल होगी, ब्रेकर्स, एवरीथिंग दैट इज़ all about the concept and feasibility study. The second one is the designing phase and the engineering. देखें आप अगर सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप कोई सा भी सोलर पैनल और इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आप उसको इंस्टॉल किस तरीके से करें, दैट्स वेयर द इंजीनियरिंग कम्स इन। आप उसका एजमथ एंगल क्या होगा, उसका टेल्ट एंगल क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कार्डबोर्ड स्ट्रक्चर होगा या फ्लोर माउंट होगा। इसके अलावा आपको एस्टिमेट करना लगाते हैं कि कितनी एनर्जी आप पर यूनिट पर डे आप जनरेट करेंगे, कितनी एक्सपोर्ट करेंगे, कितनी इंपोर्ट करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइनिंग। एंड थर्ड फेज इन द थर्ड सेगमेंट इन द प्रोजेक्ट फेज is all about the construction, the procurement, contracting, logistic preparation, and everything until the commissioning। कि आप सिस्टम को आपने डिज़ाइन कर लिया, आपको पता था, आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए, आपने सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन। आप सिस्टम को एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे। The second phase is the operation and the maintenance.
देखें, जो अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, द ओनली मेंटेनेंस यू रिक्वायर्ड इज़ टू क्लीन योर सोलर पैनल प्रॉपर्ली। इसकी और एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका अगर, लेकिन अगर आपका सिस्टम प्रॉपर्ली इंस्टॉल है तो उन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है पड़ती। जैसे यू हैव टू मेक श्योर द वायर इज़ प्रॉपर्ली वायर्ड, योर पैनल्स आर प्रॉपर्ली वायर्ड अप, और हर चीज़ प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली इंस्टॉल है, आपका डीवी बॉक्स है वो प्रॉपर्ली सील्ड है। तो फिर आपको सोलर पैनल्स को यू हैव टू जस्ट मेक श्योर यू हैव टू रेगुलरली क्लीन दैम वंस इन अ वीक और मे बी ट्वाइस इन अ वीक। और इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ फेज़ है हमारे पास डिसमेंटलिंग एंड रिसाइक्लिंग का। ये फेज़ जो है दैट इज़ स्टिल अनक्लियर एज एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट्स हैव नॉट येट रीच दिस स्टेट, क्योंकि हमारे पास जो सोलर पैनल्स होते हैं इनकी जो लाइफ होती है दैट इज़ इनॉर्मस, दैट इज़ अबाउट 25 to 30 years। और ये सिस्टम और इसका जो आर हम नॉर्मली इसको जो निकालते हैं दैट इज़ अराउंड 3 to 4 years। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है। And now we have next slide regarding the solar panel efficiency and the factor that affect it. देखें, कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं सोलर पैनल की एफिशिएंसी पे। फर्स्ट वन इज़ अ सोलर रेडिएशन अवेलेबल एट साइड। वी हैव टू मेक श्योर कि सोलर रेडिएशन जो है या सन की जो रेडिएशन है वो हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो साइट के ऊपर। जो भी हमारी सोलर पैनल की साइट है जहाँ भी हम सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, हमारे पास वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो सन रेडिएशन है वो हमें उस जगह पे आसानी से पहुंचती हो। द सेकंड वन इज द ओरिएंटेशन एजीमुथ एंड टिल्ट एंगल एलिवेशन ऑफ अ पीवीआर, दैट इज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग। देखिए, जब भी हम सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि उसका एजीमुथ एंगल प्रॉपर्ली हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ हो कि उसको किस उसका एजीमुथ एंगल क्या होगा, उसका टिल्ट एंगल क्या होगा। टिल्ट एंगल मेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद द एजीमुथ एंगल। टिल्ट एंगल की थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं। देखिए, जो भी टिल्ट एंगल होता है हमारे पास, जिस भी एरिया पे हम सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको वहाँ का लैटिट्यूड पता होना चाहिए एंड दैट शुड बी द टिल्ट एंगल। लेकिन नॉर्मली हम लोग टिल्ट एंगल पे इंस्टॉलेशन नहीं करते, उससे हम लोग कुछ प्लस माइनस डिग्री पे इंस्टॉलेशन नॉर्मली कर रहे होते हैं। और अगर हमें मैक्सिमम जनरेशन चाहिए गर्मियों में, तो जो भी आपका लैटिट्यूड है उससे आप 15 डिग्री या 10 डिग्री माइनस कर देंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम जनरेशन इन समर्स। लेकिन अगर आप जो भी आपका टिल्ट एंगल है उससे जो भी आपका लैटिट्यूड है, फॉर लेट्स से कराची का 24 हमारा जो लैटिट्यूड है, अगर मैं उसमें 15 डिग्री या 10 डिग्री ऐड कर दूंगा आई विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन विंटर्स। लेकिन अगर आप लैटिट्यूड पे ही इंस्टॉलेशंस करेंगे सो विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ऑटम और स्प्रिंग्स। तो इसके अलावा हमारे पास द वन थिंग दैट that deeply affect the efficiency, and that is the variation of that is the temperature obviously। देखिए, एक मिथ है जो कि बहुत गलत है कि अगर टेम्परेचर हम जितना सोलर पैनल्स को प्रोवाइड करेंगे वो उतनी जनरेशन करेंगे, यानी कि जितनी हमारे पास गर्मी होगी उतना सोलर पैनल मैक्सिमम जनरेशन करेंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि हमारे पास अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सोलर मॉड्यूल्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उनको टेस्ट किया जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा कि उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। The fourth one are the power reducing effect of area shading by tree nearby buildings। We have to make sure कि जहाँ भी हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रहे हो उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो, और उन ऑब्स्टिकल्स का शेड जो है वो ऑब्स्टिकल कुड बी अ ट्री, इट कुड बी बिल्डिंग, इट कुड बी एनीथिंग, उनका शेड जो है वो सोलर पैनल पे ना आ रहा हो, जिसकी वजह से हमारे पास जो एफिशिएंसी है उस पर फ़र्क पड़ता है और वो कम होती है। उसके बाद accumulation of dirt and smoke, we have to properly clean the solar panels, efficiency of inverters, system design and grid operation। इसके अलावा कमिंग बैक टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल हमने समझाने की कोशिश की है। वी हैव शेडिंग इफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन हुई भी है बट वी हैव शेड्स, जिससे सोलर पैनल की एफिशिएंसी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। Accumulation of dirt and smoke. First picture is about when the solar panel were dirty, and the after one is when we clean the solar panels, and we have seen a massive and huge amount of change in the efficiency of solar panels. इसके अलावा grid operation reliability, it is a factor beyond the control. Why is that? क्योंकि grid का जो भी reliability है या उसका operation है, that is not in our hand in our hand for obvious reasons। वो ना customer के पास उसका कोई solution है ना ही इंस्टॉलर्स के पास है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि हमारे पास जो भी ग्रिड का ऑपरेशन है वो स्मूथली काम कर रहा हो, स्पेशली ऑन ग्रिड सिस्टम्स के लिए जहाँ पे हम नेट मीटर को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो वो कुछ एरियाज़ हैं कि यहाँ पे हमें अगर हमारे पास ग्रिड स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली सोलर पैनल विल वर्क मोर एफिशिएंटली।
The possible issues in residential solar system before is a brand of inverter and solar panels. Obviously ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास सोलर पैनल्स के ब्रांड्स का हमें अंदाज़ा हो, सोलर प्लेट्स का अंदाज़ा हो कि कौन सी ब्रांड्स की अवेलेबल है और कौन सी रेटिंग की अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सेंटर ऑफ इन्वर्टर के सर्विस सेंटर का हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि वेदर इट्स अवेलेबल इन योर कंट्री, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको प्रॉपरली सर्विस सेंटर में जाके उसको रिपेयर करवा सकें, उसको प्रॉपरली आप चेक करवा सकें। टेक्निकल नॉलेज ऑफ अ सप्लायर, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। द वारंटी टर्म्स एंड द स्टॉक अवेलेबिलिटी, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में हमारे पास हमें पहले फेस करनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट इज, जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द क्लीनिंग ऑफ अ सोलर पैनल एंड यू मस्ट नो द बेसिक सेटिंग ऑफ इन्वर्टर दैट। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के बाद उनका ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। Government is helping a lot in promoting solar systems. We understand that in normal selling transitions we have 17% applicable, but in that case of solar panels there is 0% sale tax. So it is a huge benefit at the moment. Similarly, when you are importing solar panels, you have 0% duty. So normally we have duties from 5% to 25%, but there is no duty on solar panels and solar inverters. So combining these two things, this is a huge benefit for end user to utilize solar panels cost effectively. Then we have bank loans. Bank loans are available for solar panels. Bank is providing around 6% markup, and they must you must have to do net metering if you are residential solar consumer or an industry level. And so bank will provide their conditions like the property in your name, and then an electricity meter should be in your name, and you have to get the installation done through AEDB, which is a central body for all renewable issues from government side. The contract should be approved by AEDB. So government is doing a lot about promoting solar panels. Now, how the solar panels are trading in the market? We can see that you can be a IPP who are setting up 1 megawatt, 2 megawatt solar plants and selling power to utility companies, or you can be an importer just trading solar panels inverter, or you can be a solution provider who are buying solar panels from these importers and then making solution for home users or residential users. AEDB classify all these contractors in different categories. Those who can do system installation up to 50 kilowatt, those who can do up to 20 to 50 kilowatt, or up to 1 megawatt. So if you are a home user or industry user, you must understand and evaluate that who is your installation provider, and how he can provide you warranties, guarantees, and after sales support, which is important for future aspects. These are solar panels brands available in Pakistan. We are not promoting anyone, but there are some solar brands where bank can provide loans. These are called bankable solar panels. So normally these solar brands have their representative available in Pakistan, and there are importers who can provide warranties and after sales services against any claims. So one should understand, and one should buy only from the reputed distributors and dealers in their projects. What is future of solar system? There is a huge potential in solar technology. At the moment, 50 million population in Pakistan, around 27% of land area is without power, and because of the dispersed population, we cannot provide them power through transmission network. So the best solution is solar panels, and the government is also targeting to achieve 30% energy mix through renewable energy, which is very ambitious target. As the moment we have around 5% share from renewable, that includes both solar and wind energy. So if these favorable policies of the government continues, then we can see some uh, achievement in the target. Local production is at the moment, have seen that some companies trying to collaborate with Chinese companies, but no such uh, concrete progress has been made.
Uh, in this regard, I think the academia, industry, and the government has to play a role together so that local manufacturing can be achieved in large numbers if they can consume, and if you have proper laboratories for the quality testing, then it will really help in local production, and potential is huge. So this is all about. We can answer all your questions. Thank you.